हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू कश्मीर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से पहलगांव। दिस हैज़ बीन टेकन ऑल द वे। दिस इज़ द एप्पल गार्डन विच इज़ a pit stop on the way. And once we reached there, we had already booked from our guide the horse ride or the pony ride, through which हम लोग जितने भी वहाँ पे साइट सीन्स है वो करने वाले थे। मेजरली हाईलाइटिंग था आपका मिनी स्विट्ज़रलैंड। Plus there were like 7 spots which we were supposed to cover that day. And since we reached a little late, but तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम क्रंच हुआ था. But talking about the sightseeing, it is beautiful. The ride is beautiful and very very adventurous. And as you can see in the videos, the weather that day was like perfect sunny weather and नज़ारे इतने सुंदर. So overall it was a great experience. This was the first stop, which was some waterfall. I don't exactly remember the name of the waterfall, but जहाँ पे भी आपको रोकेंगे, every spot in itself is very very beautiful, picture perfect, photogenic. You will want to sit there and click photos and just make memories. So yeah, since we were running a little late, so we were trying to cover up as many spots as we can. So I'll suggest अगर आप जा रहे हैं पहलगांव, so if you can reach early in the morning and start off with this 7 point sightseeing a little earlier, तो आप ज़्यादा enjoy कर पाएंगे. Nevertheless, scenic beauty इतना है, wherever you go, whichever place you stay in, whatever spots you see, you're gonna enjoy and relish it all. So इसके बाद after this thing, we continued with the ride and we went for the next spot, which was मिनी स्विट्ज़रलैंड. एंड मिनी स्विट्ज़रलैंड का ये एक खासियत है कि यहाँ पे अगर आप सुबह सुबह आते हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ टूरिस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड हैविंग अ यूनिक पिकनिक. सो ये पिकनिक स्पॉट भी है विच इज़ सराउंडेड. इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पॉट. इट्स सराउंडेड बाय हिल्स ऑल ओवर एंड बीच में एक बड़ा सा स्पेस है एंड यू कैन सिट एंड ईट योर थिंग्स एंड जस्ट चिल विद अ फैमिली टाइम. This is another spot which was on the way. So it was some offbeat place, but ये इतनी खूबसूरत थी ये जगह. We decided to take a pit stop and just click some photos. ये एक बुखारा है जो पूरे कश्मीर में बहुत फेमस है एंड इट्स वेरी यूनिक. सो मैंने इसका क्लिप लिया था. इट इज़ बेसिकली टू कीप द रूम वार्म सिंस टेम्परेचर ड्रॉप डाउन एट नाइट, but it was very unique. And this is the very next morning, bright sunny day again, and what a view. This was the view from my room. So ये बहुत ही stunning view था and the scenic view from there. And this is a home stay. This is not really a hotel. तो ये होम स्टे एक बहुत सेक्लूडेड स्पेस में था जहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा कोई स्टे था नहीं. एंड आई विल give the name of the homestay if you guys want to know. And look at this stunning view. Like waking up in the morning with such view, I think I'm going to remember this for the rest of my life. Next we got ready and we left for the second day Pahalgaon. And today we were covering Aru Valley, Betab Valley and Chandanwari. ये तीनों स्पॉट इट्स समवेयर नियर अबाउट पास में ही है एंड इट डजेंट टेक मच ऑफ अ टाइम. आई विल सजेस्ट दैट अगर आप लोग को प्लान आउट करना है पहलगांव में 2 दिन, सो यू कैन कीप दिस आइटिनरी ऑन द फर्स्ट डे सिंस इट डजेंट टेक मच ऑफ योर टाइम. एंड द सेकेंड डे में यू कैन कीप द पॉनी राइड सिंस आपको पॉनी राइड से अप जाना है आना है एंड इट टेक्स अ लॉट मतलब लॉन्गर टाइम कंपेयर टू दिस वन. So yeah, this is the beautiful पहलगांव. All scene scenery जितना भी आप कवर करेंगे आपको कम लगेगा. And this is where we have reached the spot. This was the first spot.
You will see mostly tourists coming there clicking photos. You'll have guides all around who will want you to like click photos and videos. You can opt for it. Otherwise, you can just chill with your loved ones and make memories. It's a very, very beautiful spot. So, yes, guys, this was some of my clips from the Pahalgaon trip. Now, next, we are going to go to Gulmarg. So, stay tuned for more videos and thank you so much for watching. Bye bye.